till so. Good evening, everyone, and welcome to today's webinar on Meta Ad campaigns, advanced techniques. My name is Gaurav Shakya, and I'll be your host for today's session. We are excited to have you all join us to explore the latest strategies and insights on leveraging Meta's advertising capabilities. Before we dive in, I would like to extend a warm welcome to our esteemed speaker, Rahul Kapadia. He is founding member of ViralMint Media, independent digital consultant and strategist. With his extensive experience in digital marketing and Meta's advertising solution, Rahul will share valuable insights and practical tips to help you optimize your ad campaigns. In today's digital landscape, effective advertising is crucial for business to reach and engage their target audience. Meta's platform offer unparalleled opportunities for advertisers, and Rahul will guide us through the best practices and latest trends. The floor is your Rahul. Please guide us and share your expertise and inspire us to unlock the opportunities of this Meta ad campaigns. Great, Gaurav. Thank you for the introduction. First of all, thanks that I got an invitation from Jabalpur Incubation Center for being invited as a guest speaker for one of the most prominent sessions on meta ad campaigns, right? I would love to share my insights all along. Thank you for a very warm introduction, Gaurav. So, guys, first of all, a warm welcome to the webinar. We'll be today discussing about what are meta ad campaigns, how do you use advanced techniques in terms of learnings and insights that I have from my own career, right? I have been into this for last almost 7 years. I'm one of the founding members at ViralMint Media, right? This is an agency which is based out of Pune, and we function independently there, right? We are also one of the meta partners, apart from being an independent agency. So I'll tell you a bit about how have we enrolled things, how have we helped brands to scale, what kind of spends we have managed, what kind of strategies are inconvenient, or what kind of strategies are inconvenient that startups today do, but they are not able to scale on Meta as a platform. The important part that comes over here is that they should be understanding what platform is, what are the capabilities of the platform, and then working on the deliverables based on their buyer's persona, right? So just about giving an introduction, like I have been into this domain for almost last 7 years, managing like meta ads for approximately like 100 odd brands, more than that to be very fair. In my short stint, in my last 7 years, I've actively serviced around about 500 plus consumer brands, right? You would know the names. This includes Wildcraft, you would know VIP, you would know American Tourister, all the prominent brand names that are available all across India and are present pan India, right? So predominantly what happens is people actually do not know what Meta as a platform is capable of, right? They strongly feel that Meta is, as a platform is kind of a platform which is more used for creating awareness as a mechanism. But that is completely wrong. So I'll tell you few things about Meta which people do not know, and how to actually leverage the platform very correctly, right? So it starts with what are the correct ad objectives in Meta, right? Coming up, so Meta as a platform, first of all, comprises of two platforms. One is Facebook and the other one is Instagram, right? So coming up with what kind of ad objectives you should be focusing on the platform. First one starts with awareness. So awareness as in, now say अभी आपका एक ब्रांड है, राइट? एक ब्रांड है, आपको पता है आपके ब्रांड के बारे में, बट आपको ये पता नहीं है कि कितने ऑडियंस को, सामने वाले कितने ऑडियंस को आपके ब्रांड के बारे में पता है, राइट? इफ यू आर सेलिंग अ ब्रांड, इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, इफ यू आर say dealing into a service, right? People opposite to you or whatever is the audience size would not know कि आपका ब्रांड क्या करता है, आप कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करते हो, आपके पास कौन सी सर्विस है, राइट? तो ये पहला जो एड ऑब्जेक्टिव है, राइट, एग्जैक्टली दैट इज मेंट फॉर अवेयरनेस. सबसे पहले आपको ब्रांड के बारे में लोगों को बताना है. हाउ विल यू डू दैट? द फर्स्ट थिंग इज, आपको पहले वेबसाइट डिजाइन करना है या एक लैंडिंग पेज डिजाइन करना है, और आपको उसके बाद
मेटा पे एड्स करने हैं. आफ्टर रनिंग एड्स ऑन मेटा, यू विल टेक पीपल और द ऑडियंस दैट यू हैव रिलेटिंग टू योर ब्रांड ऑन दैट पर्टिकुलर लैंडिंग पेज. This will help you create awareness about your brand, right? Similarly, the second point comes in कि अभी awareness तो हो गया, right? Second point comes in कि किस type का traffic आ रहा है. So traffic analysis is one of the most important objectives that you should be doing, because क्या होगा ना, say for an example, if it's a service brand which is catering to providing luxury services, say for an example, it's something like Urban Clap Plus, which is into luxury services, and they provide services for your home, right? तो वहां पे आपको एनालिसिस करना है कि किस टाइप का ट्रैफिक आना चाहिए. सो नाउ मैंने ऐसे किस टाइप का ट्रैफिक आना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट कि कौन लोग आने चाहिए आपकी वेबसाइट पे, इट्स मोर टू डू विथ व्हाट इज देयर पर्सोना, what kind of things are they relating to, is it the right audience that will be buying your service, is it the right TG that has the capability to spend for your service, right? This all deals with traffic analysis. थर्ड थिंग्स इज कि अभी एक बार ब्रांड के बारे में पता चल गया या सर्विस के बारे में पता चल गया, राइट? ट्रैफिक भी आ गया आपके लैंडिंग पेज पे. तो तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंगेजमेंट. अगर आप लोग आपके पेज पे आ रहे हैं, राइट, दे आर कमिंग ऑन टू योर वेबसाइट, दे आर कमिंग ऑन टू योर लैंडिंग पेज, और अगर वो एंगेज ही नहीं करते हैं, तो जो आपने अमाउंट स्पेंड किया है मेटा एड कैंपेन पे, दैट इज कंप्लीटली अ वेस्ट फॉर यू. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ डू यू क्रिएट एंगेजमेंट ऑन योर लैंडिंग पेज, ऑन योर वेबसाइट, राइट? सो दिस इज टू डू विथ what kind of chatbot flow should you have, should there be a video explaining about your product, should there be a pop-up message telling about what the brand is doing, right? Or for an example, now if you visit any particular website, right, you would see that the website usually have pop-up ke for new customer I'll give you a 10% discount, right? So that is a coupon code of new 10 or a coupon code of new 5. So that is how you create relevant engagement with people who are visiting your website or the landing page, right? Last, it comes to lead. अब क्या होता है, बेसिकली आपने एंगेज भी कर लिया. अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो तो सामने वाले को सिर्फ आपका ही मेटा एड दिखेगा, उसे तो और कई सारे ब्रांड्स के मेटा एड्स दिखेंगे, राइट? नाउ इफ ही इज इनटू अ सर्विस इंडस्ट्री, ही माइट सी एड्स ऑफ 100 डिफरेंट ब्रांड्स. इफ ही इज इनटू अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ही और शी माइट सी एड्स ऑफ 100 डिफरेंट ब्रांड्स अगेन, राइट? तो वहां पे आता है लीड. लीड जनरेशन का मतलब होता है क्या, अब आपने एंगेज भी कर लिया, हाउ डू यू अट्रैक्ट द ऑडियंस टू कम एज अ लीड टू योर ब्रांड ओनली, राइट? नाउ दिस कैन बी डन अगेन इन वेरियस वेज. या तो जो आपने लैंडिंग पेज बनाया उस पर आप कस्टमर टेस्टिमोनियल्स डाल दो, वेयर पीपल आर एबल टू रिलेट टू कि आपने ये प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड किया है, तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस दैट दे हैड, राइट? व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू हैड प्रोवाइडेड देम, व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस, एंड हाउ great they were feeling after they had the service or the product that was being offered by you, right? Finally, it comes to app promotions. You would see कि, I mean, say for an example now, अगर मैं एक सिंपल से सिंपल ऐप का एग्जांपल देता हूँ, which is डीमार्ट, right? तो क्या होता था, 90% of people who are not tech savvy used to go to डीमार्ट offline stores. They used to purchase it from there. वहां से वो खरीदते थे. But major e-commerce vendors, including DMart, who are also offline vendors, have come up with their own apps. The reason is, after COVID, 90% of India, or say 85% of India in tier 1, tier 2, and half of tier 3 cities is digitally dominized, right? So people now understand how do you purchase through apps. People actually are more used to getting purchases sitting at home and out of their own convenience, right? So सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ डू यू क्रिएट एन ऐप, हाउ डू यू प्रमोट दैट ऐप ऑन मेटा एज अ प्लेटफॉर्म. पहले ऐप पे आपको इंस्टॉल कैसे करवाना है लोगों से, वो इंस्टॉल करवाने के बाद आपको उससे सेल कैसे करना है, राइट? द बेस्ट एग्जांपल कुड बी ऑफ मिंत्रा. पहले व्हेन मिंत्रा स्टार्टेड, दे वर मोर फोकसिंग ओनली ऑन इंस्टॉल्स, एज इन के इंस्टॉल कैसे मुझे ड्राइव करना है मेटा से एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? दे वुड गिव यू ऑफर्स फॉर गेटिंग द ऐप इंस्टॉल्ड एंड ऑल ऑफ दैट. उसके बाद आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है कि हमें सेल कैसे लाना है. एक बार ऐप तो आ गया, राइट, कस्टमर के फोन में, देन व्हाट डू यू सी इज Myntra giving out lot of discounts and offers, and they send you a lot of push notifications for all of that, right? Push notifications is a great way of nudging your customer time and again through app promotions as a platform, right? And final is catalog sales. आपने सब कुछ कर लिया, you have brought the customer also to your app, you have brought the customer to your landing page if it's a web type of product or a service that you are selling. Then it comes to conversions. कन्वर्जन क्या होता है बेसिकली, कि हमें कस्टमर को परचेज कैसे करवाना है. How should we be convenient as a platform that the customer should come to our platform and purchase? So these are typical 5 ad objectives, right?
In conversions, it need not be a product to purchase only. It can be a service where the customer is filling in his lead form, as in leaving his contact details or her contact details, जहां पे exactly customer अपना नाम बताएगा. He or she will give email ID and he or she will give the contact number also, so that the opposite vendor to which the landing page is, I mean, who has made the landing page would get the details and he or she will be able to contact the customer directly from there. So this was more about ad objectives, and these are 5 most important things that Meta as a platform has to offer, right? जो भी होता है वो इसी के बाद होता है. सबसे पहले ये 5 ad objectives जो होते हैं वो सबसे important होते हैं, right? We'll move on to the next slide. So this is talking about how do I optimize Meta ads for 5 different stages, right? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि अवेयरनेस स्टेज होता है, राइट? तो अवेयरनेस में क्या होता है, अब एक चीज है कि सामने वाला एक कस्टमर है आपका, उसे ना आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में पता है, बट उसे ये पता है कि मुझे एक प्रॉब्लम है. दैट इज व्हेन यू से दैट द कस्टमर इज अनअवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट और योर सर्विस. उसके बाद सेकेंड स्टेज आता है व्हेन पीपल आर प्रॉब्लम अवेयर, एज इन उनको ये पता है कि ये प्रॉब्लम है मेरा, मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन भी मिल सकता है, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन सोल्यूशन दे सकता है और कैसे सोल्यूशन मिल सकता है इसका, राइट? थर्ड स्टेज व्हेन यू कम टू इट इज सोल्यूशन अवेयर. सोल्यूशन अवेयर के टाइम पे क्या होता है कि आपको पता होता है कि इसका सोल्यूशन तो मिल सकता है, बट आपको अगेन ये नहीं पता होता है कि कौन सा ब्रांड या कौन सा सर्विस मुझे ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा. फोर्थ स्टेज दैट यू हैव इज प्रोडक्ट अवेयर. प्रोडक्ट अवेयर में क्या होता है कि उन्हें ये पता होता है कि आपके पास एक सोल्यूशन है इसका, आपके पास एक प्रोडक्ट भी है जो इसको कैटर कर सकता है, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो प्रोडक्ट कौन ऑफर कर रहा है या वो कहां से मुझे परचेस करना है. एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ कस्टमर इज मोस्ट अवेयर. उसे ये भी पता होगा कि मुझे सोल्यूशन कैसे लाना है, उसे ये भी पता होगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है जो सॉल्व करने में हेल्प करेगा, राइट? तो इसी तरह जब आप एक एड कैंपेन रन करते हो, या फॉर एन एग्जांपल व्हेन यू स्ट्रेटेजाइज एन एड कैंपेन, यू हैव टू टेक केयर लाइक हाउ डू यू टेक अ कस्टमर फ्रॉम अ स्टेज ऑफ बीइंग अनअवेयर to being most aware about your brand. He or she would be unaware about the problem first, and then he or she would be aware about the brand or the service that you are catering to, and he'll also be aware about what will be the problem statement and the solution for the same, right? अगर आप ये फनल से डिजाइन करोगे अपने मेटा एड कैंपेन्स, तो कभी भी आपका कैंपेन फेल नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे आप कस्टमर की साइकोलॉजी को समझ रहे हो. ये नहीं है कि आप सिर्फ कैंपेन स्पेंड कर रहे हो या फिर आप प्लेटफॉर्म पे जाकर के स्पेंड कर रहे हो. It's more to do with understanding the customer psychology and how he or she would behave when he or she comes to know about the product or service that you have to offer, right? So predominantly, we'll again move on to things which are most ignored about. So over the last 5 years, I have personally viewed more than 2000 plus meta ad accounts, right? This includes ad accounts of brands. This includes ad accounts of service industries. This includes ad accounts of different industries that are engaging, right? I mean, I've also viewed ad accounts of government. You would know you have a lot of ad campaigns done by government officials, right? When a lot of things happen along in an area, right? So this includes all of that, right? So usually what people do not know is people usually do not understand कि हमें कब edit करना है कैंपेन में, हमें किस तरह से कैंपेन क्रिएट करना है, राइट? कितना हमें बजट देना है, कौन से फेज पे जाकर के कैंपेन को, वेदर हमें अनअवेयर स्टेज में बजट जाना देना है, वेदर हमें अवेयर स्टेज में बजट ज्यादा देना है, या हमें कौन से फनल में एग्जैक्टली बजट ज्यादा देना है कैंपेन को, राइट? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जितने ज्यादा कंटेंट पीसेस आप क्रिएट करोगे, जितने ज्यादा क्रिएटिव्स आप क्रिएट करोगे, और जितने ज्यादा क्रिएटिव्स आप ए बी टेस्ट करोगे प्लेटफॉर्म पे, बेसिकली आपको ये समझना है कि मेरा क्रिएटिव है या मेरा कंटेंट है वो किस टाइप के कस्टमर के लिए बना है. दैट इज नंबर 1. इस पे कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है, कितने कस्टमर्स उस पे क्लिक कर रहे हैं, कितने कस्टमर्स मेरा लैंडिंग पेज विजिट कर रहे हैं, राइट? एंड बेसिस ऑन ऑल ऑफ दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मुझे कब एडिट करना है उस एड कैंपेन में, या मुझे क्या बजट देना है उस एड कैंपेन को, राइट? So this is the biggest mistake that marketers today make. They do not understand कि हमें exactly किस स्टेज पे कितना बजट देना है कैंपेन को. Secondly, आप ये सुनते होगे कि Instagram पे एज अ प्लेटफॉर्म रील वायरल चला गया, राइट? तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे देखे होंगे आपने जो ट्राई करते हैं स्पेंड करने का उस कंटेंट पीसेस पे जो वायरल ना हो, राइट? बट ये ऐसा हमेशा नहीं होता. आपका रील वायरल कब होगा? जब से फॉर एन एग्जांपल, अब मेरे हिस्ट्री में व्हाट आई हैव सीन इज 500 600 brands में I have seen that we have only seen a few brands where the reels have gone viral, right? But हमें वो monetize कैसे करना है?
कई लोग ये करते हैं कि यार हमारा रील तो वायरल चला गया, पीपल हैव शेयर्ड, पीपल हैव एंगेज, पीपल हैव कमेंटेड, एवरीथिंग हैज बीन डन राइट, बट हमें वो लेवरेज कैसे करना है पेड प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज मेटा दो टाइप्स में सर्व करता है राइट. वन इज द ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म दैट यू हैव फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड द अदर इज द स्पॉन्सर एड दैट यू सी ऑन फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम राइट. तो आपको वो एग्जैक्टली सर्व कैसे करना है, दिस इज वेयर यू हैव टू टेक योर डिसीजन. मैक्सिमम पीपल मेक अ वेरी ह्यूज मिस्टेक दैट दे डू नॉट स्पेंड ऑन रील्स दैट हैव गॉन वायरल, बट ये नहीं करना है. हमें एक्चुअली उसी कैंपेन्स पे, उसी रील्स पे स्पेंड करना है जो वायरल गए हैं, बिकॉज पीपल ऑलरेडी नो दैट दिस इज ए बी टेस्टेड रील, पीपल आर ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट, और अगर आप उस पर स्पेंड करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे देन रनिंग इट इन एन ऑर्गेनिक वे राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे अपना टारगेट ऑडियंस क्या चूज करना है राइट. A brand which is into a mass segment would not understand what would be my niche. A brand which is into a luxury segment would similarly not understand what would be my niche while choosing the target audience, right? तो हमें ये समझना है, सी सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सामने वाले को एक्सप्लेन कर पा रहे हो राइट. If you are able to create a creative, or if you are able to create a story where you are able to make an opposite person understand about your product, an opposite person understand about your service that you are catering to, then half of your work is done. बिकॉज क्या होता है ना, बेसिकली मेटा एज अ प्लेटफॉर्म टारगेटिंग पे काम तो करता है, बट अगर आपकी चीजें कस्टमर को नॉर्मली समझ में आएगी राइट, विदाउट टारगेटिंग एन ऑफिशियल कस्टमर. नाउ इफ आई हैव टू गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल देता हूं बाटा का राइट, बाटा के लिए पूरा इंडिया ही टारगेट ऑडियंस है. दे के नॉट चूज कि मेरा टीजी क्या है, मुझे प्लेटफॉर्म पे कौन से बायस पर्सोना को टारगेट करना है. दे हैव शूज केटरिंग फ्रॉम मेल एंड फीमेल, से फुटवेयर केटरिंग फ्रॉम मेल एंड फीमेल टू फुटवेयर catering from size of say 2 or 3 which can be used by infants to a person who is an aged person right, a senior citizen. तो उनके लिए तो पूरा ही ऑडियंस, पूरा यूनिवर्स ही एक टारगेट ऑडियंस है राइट. तो इस टाइम पे बाटा जैसे ब्रांड्स क्या करेंगे, फॉर देम दे अंडरस्टैंड दैट क्रिएटिव इटसेल्फ इज आवर न्यू टारगेटिंग. एज इन उन्हें ये पता है कि हमें क्रिएटिव ही ऐसा क्रिएट करना है वेयर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द कस्टमर एंड वी आर एक्सप्लेनिंग हिम और हर what exactly should be the USPs of the product that you should be knowing about before making a purchase through us, right? Secondly, आपने बहुत सुना होगा that the age of AI is here, right? So what happens is Meta पे बहुत सारे ऐसे campaign types है. You have Advantage Plus Shopping, you have Performance Max and a lot of other campaign types where people are actually trying to understand कि वो काम कैसे करते हैं. But again, when AI is coming in, you don't have to build an appetite where you are trying to understand the platform, right? Rather what you should be doing is कि मैं कितना एक्सपेरिमेंट कर पा रहा हूं, क्या मैं 25 assets, 30 assets as in 25 content pieces, 25 creatives और 30 content pieces और 30 assets वो पर्टिकुलर एड कैंपेन को दे पा रही हूं when AI is here. The reason for that is AI के एज में the customer or the person who is running an ad campaign, marketer, right? He or she should not be the decision maker. Why AI is here is AI is here to solve the problem of a marketer, right? तो अगर आप decision maker बनने जाओगे, you will end up doing a lot of mishaps and you won't understand the platform because it's completely a black box. You would not get where the data from Meta is coming from, or you would not get कि Meta को data कहाँ से मिल रहा है बेसिकली ब्रांड के बारे में, टारगेट ऑडियंस के बारे में. तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपका एक्सपेरिमेंटेशन करने का एपिटाइट कितना है. क्या आप 25, 30 क्रिएटिव्स, क्या आप 40 से 50 एड कैंपेन्स ऐसे क्रिएट कर पा रहे हो बाय यूजिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ creatives all together or having different set of communication all together where a person where you have left everything on Meta to perform, but a person opposite who is your customer, Meta ही decide करेगा आपके content piece से कि मुझे किसको दिखाना है exactly, right? So that is where we are leading to. The age will be this right now. Second thing is you would have heard that organic reach is dead, right? People keep on saying कि बहुत सारे content creators है, किसी का रील वायरल हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है. People are not able to understand what is happening on the platform. But that is not true again, right? You could see that if you have created the content in the right way, or if you have tried to put the content up on the platform in a right way, you'll be able to see that platform is liable to give you results, right? Or your decision making again should happen with a lot of experimentation. This should not happen with
having a one single creative, posting that on an ad platform and then you realize कि यार अब तो रिजल्ट नहीं आ रहा है मुझे. नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल. आपको जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विद क्रिएटिव्स, जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विद content pieces, communication, you have to do all of that, right? But that should be again relating to your buyer's persona, the product that you are selling, and all of that should be completely aligned, right? Now a lot of marketers make a mistake that they only see ROAS. कि यार मैंने मेटा पे स्पेंड तो कर दिया, I've spent 10,000 rupees. What is the ROI that I'm getting through the platform, right? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है. सी प्लेटफॉर्म का आरओआई तब आएगा जब आपका लैंडिंग पेज अलाइंड होगा, जब आपका वेबसाइट अलाइंड होगा, राइट? बिकॉज आप वेबसाइट, प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म इज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर रहा है सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में, राइट? बट आपका वेबसाइट है जो आपको हेल्प कर रहा है कन्वर्जन लाने में, या आपका लैंडिंग पेज है जो आपको हेल्प कर रहा है कन्वर्जन लाने में, राइट? सो आपको ये नहीं देखना है कि मेरा आरओएस क्या है, इंस्टेड आपको ये देखना है कि यार मेरा क्रिएटिव है, आई एम यूजिंग वन वीडियो, राइट? वो वीडियो अगर मैंने 100 लोगों को दिखाया और उस पे वहां पे शॉप नाउ बटन है, या इफ आई एम सेलिंग अ सर्विस देन आई हैव एन ऑर्डर नाउ बटन, और इफ आई एम सेलिंग से फॉर एन एग्जांपल अ मेडिकल सर्विस देन आई हैव अ कॉन्टैक्ट अस बटन, राइट? तो वो 100 लोगों में से कितने लोगों ने क्लिक किया, इससे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मेरा जो कम्युनिकेशन है वो कितने लोगों को एग्जैक्टली समझ आ रहा है, राइट? दैट इज व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन टू, विच इज कॉल्ड एज क्लिक थ्रू रेट. एंड देन there are two things which you should be focusing on to. One is hook rate and the other is hold rate. hook rate ये होता है कि कितने लोगों को पहले 3 सेकंड में देख करके आपका वीडियो समझ आया, कितने परसेंटेज ऑफ ऑडियंस ने 3 सेकंड के बाद आपका वीडियो देखा. बिकॉज जब आप रील्स देखते हो तो आप ये देखोगे कि लोग बहुत फास्ट स्क्रॉल कर देते हैं, दे डू नॉट वेट फॉर द रील टू गेट कंप्लीटेड, राइट? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हुक रेट क्या होता है, राइट? सो हुक रेट इज कि 3 सेकंड में लोग कितने लोग एंगेज कर पा रहे हैं आपके वीडियो के साथ. एंड होल्ड रेट इज बेसिकली कितने लोग एग्जैक्टली आपका वीडियो 15 सेकंड तक देख पा रहे हैं. दिस इज टू अंडरस्टैंड कि आपके ऑडियंस में या आपके वीडियो में इतना रेलेवेंसी है कि सामने वाले को जब आप अपना वीडियो दिखा रहे हो या जब आप अपना क्रिएटिव दिखा रहे हो उसे वो समझ आ रहा है और वो एटलीस्ट देख रहा है पूरा. रेवेन्यू आना, आरओआई आना बहुत बात की बात है. अगर वो वीडियो देख ही नहीं रहा है या आपका कम्युनिकेशन सुन ही नहीं रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको रेवेन्यू आएगा उससे, राइट? तो वो चीज एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि व्हाट आर द बेंचमार्क्स दैट यू हैव इन द इंडस्ट्री, राइट? एज इन सीटीआर कितना होना चाहिए, हुक रेट कितना होना चाहिए, होल्ड रेट कितना होना चाहिए, राइट? एओवी कितना होना चाहिए, कन्वर्जन रेट कितना होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग. यू शुडंट बी गोइंग ऑन टू आरओआई डायरेक्टली. वन अगेन मेजर कॉमन मिस्टेक दैट अ पर्सन मेक्स इज कि हम लोग मीडिया बाय कर रहे हैं मेटा पे. इंस्टेड आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बाय इंप्रेशंस. व्हाट इज एन इंप्रेशन? इंप्रेशन इज कि आप कितने लोगों को एड दिखा पा रहे हो मेटा पे, राइट? यू आर नॉट ट्राइंग टू बाय मीडिया ऑन मेटा. कितने लोगों को आप मेटा पे ऐड दिखा रहे हो. अगर आपका क्रिएटिव या कंटेंट स्ट्रीमलाइन नहीं रहता है, राइट, तो आपका ऑटोमेटिकली रीच मेटा कम कर देता है. सो सबसे इंपॉर्टेंट इसके आप क्रिएटिव कंटेंट ब्लॉक कैसे क्रिएट कर रहे हो, दैट इज वन. सेकेंड थिंग इज, आर यू रनिंग दैट क्रिएटिव कंटेंट ब्लॉक फॉर द राइट बायर्स पर्सोना. बायर्स पर्सोना क्या होता है कि वो टीजी आपका, अभी से फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग अ ब्रांड लाइक एच-एन-एम, राइट? इफ आई हैव अ ब्रांड लाइक एच-एन-एम, तो मुझे पता है क्या कि सामने वाला जो एच-एन-एम खरीदेगा वो पूरे दिन में क्या और कर रहा है, राइट? वेदर ही हैज अ सूटेबल इनकम सोर्स, वेदर ही हैज हिज ओन कार, वेदर ही हैज हिज ओन होम. बिकॉज ये सारी चीजें बहुत जरूरी है. अनलेस एंड अंटिल यू डू नॉट आइडेंटिफाई हु इज योर राइट टारगेट ऑडियंस, यू विल नॉट बी एबल टू सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, राइट? तो आपको ये याद रखना है कि आप हमेशा इंप्रेशंस बाय करते हो मेटा पे, एंड यू नेवर बाय मीडिया ऑन मेटा, राइट? As I said previously, you have to avoid frequent changes. You have to always A/B test, and it cannot be that you are A/B testing anything. You have to create at least 25 different or 30 different set of communications depending on what kind of product or service you are trying to sell. And basis on what is performing well, फिर उसी को scale करना है. हमें 25-30 क्रिएट करके 25-30 को स्केल नहीं करना है. हमें ये देखना है कि सबसे अच्छा परफॉर्म क्या कर रहा है, राइट? सो अभी बेसिकली लोगों को मिसकंसेप्शन है कि रील्स काम करते हैं, स्टोरी एड्स काम करते हैं या फीड एड्स काम करते हैं, राइट? सारी चीजें आपके एक्सपेरिमेंटेशन पे डिपेंड करती है. सब कुछ आपके, आई वुड से, आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है. जब मेटा ने 3 टाइप ऑफ प्लेसमेंट्स क्रिएट किए तो उनका तो काम है कि मुझे तीनों प्लेसमेंट्स पे कस्टमर्स को रिजल्ट देना है या ब्रांड्स को रिजल्ट देना है. बट आप कितना इफेक्टिवली वो प्लेसमेंट को लेवरेज कर पा रहे हो, इट्स समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट?
Again, focus on your store. It's the most ignored part. This is more about how do you create a landing page. आपको किस तरह से अपने वेबसाइट पे फोकस करना है, आपको किस तरह से अपने लैंडिंग पेज पे फोकस करना है, एंड हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग अ लैंडिंग पेज और अ वेबसाइट दैट इज सुटेबल फॉर एवरीवन. Then you have the most important part, which is attribution and measurement, right? बहुत लोग क्या कहते हैं कि मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि यार मैंने एड मेरा मेटा पे देखा, बट एक कस्टमर ने जाके प्रोडक्ट उसको डिस्कवर तो उसने मेटा से कर लिया, राइट? एक आप हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर डायसन का या बजाज का हेयर ड्रायर है, राइट? या फिलिप्स का हेयर ड्रायर है, फॉर दैट एग्जाम्पल. फिलिप्स का हेयर ड्रायर है, आपके टीजी ने, सही टीजी ने आपका एड देख लिया, बट अभी ये जरूरी नहीं है कि वो सही टीजी मेटा पे ऐड देख करके या इंस्टाग्राम पे ऐड देख करके इंस्टाग्राम से ही खरीदेगा या आपके वेबसाइट से खरीदेगा. वो कस्टमर के पास पूरा लेवरेज है, या वो आपके वेबसाइट से खरीदेगा, या वो जाकर के अमेजोन से खरीदेगा, या आपका ब्रांड मिंत्रा पे अवेलेबल है तो वो मिंत्रा से खरीदेगा, राइट? आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप मेरे वेबसाइट से ही खरीदो. आप कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, आप कस्टमर को सिर्फ सर्विस के बारे में बता सकते हो, बट आफ्टर ऑल कस्टमर का ही डिसीजन होता है और वेयर ही और शी शुड बी परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम और द सर्विस फ्रॉम, राइट? सो द बिगेस्ट पार्ट इज कि कभी भी जस्ट रिमेंबर दिस के फोटो और वीडियो हमेशा पहले बिकता है ऑनलाइन. आपकी सर्विस के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को नहीं पता है, बट जो आप फोटो दिखाते हो प्रोडक्ट का, जो आप सर्विस का वीडियो दिखाते हो, वही सामने वाले कस्टमर को पता चलता है कि वो क्या खरीदना चाह रहा है. तो सबसे पहले फोटो और वीडियो बिकता है. सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट इन गुड क्रिएटिव्स, इन्वेस्ट इन गुड फोटोग्राफी, इन्वेस्ट इन गुड क्रिएटिव शूट, इन्वेस्ट इन गुड लाइफस्टाइल शूट. जब तक उसको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिखेगा तब तक प्रोडक्ट बिकने का सवाल ही नहीं उठता है, राइट? एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर वो प्रोडक्ट दिखेगा तो बिकेगा. दिस यूज टू बी अर्लियर. मैं दिखा तो रहा हूं प्रोडक्ट, राइट? तो वो बिक जाना चाहिए, बट आज ऐसा नहीं है. आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि दिखेगा तो बिकेगा तो सही, बट वो ट्रू सबके लिए है, आपके लिए ट्रू नहीं है वो सिर्फ, राइट? बट आज इंपॉर्टेंट क्या है कि रुकेगा तो बिकेगा. व्हाई आई एम सेइंग रुकेगा तो बिकेगा? द रीजन इज जब तक आप वो स्क्रोल रील का रोक नहीं पाओगे, या जब तक वो फीड पे स्क्रोल करते हुए इंसान को रोक नहीं पाओगे, राइट, तब तक वो प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा, तब तक वो आपका सर्विस अवेल नहीं करेगा. दैट्स फॉर श्योर. आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मैं पहले 3 सेकंड में ऐसा क्या करूं कि सामने वाला रुक जाए, मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस एक्चुअली वो समझने की ट्राई करे, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट, राइट? I mean, it was great interacting with all of you because the thing that I wanted to convey here was कि आपको exactly क्या सोचना चाहिए मेटा के बारे में. हमेशा ROI के बारे में नहीं सोचना चाहिए, right? And focus on what kind of aesthetics you have in your store, what kind of pictures you have created for your product, what are the creatives you are trying to create, right? And all of that a little more in detail, right? So once again, thank you from my side. Thank you, Gaurav, again for inviting me as a guest, right? I would love to take any questions that we have further. Thank you, Rahul. Yeah, We have two questions here. One of the question is, what do you think is the right strategy for startups to explore Meta as a platform? right. Great And question again. other one is that, yes. Great question again, Gaurav. I mean, as I said, कि स्टार्टअप को सबसे पहले समझना है कि वो क्या बेचने की ट्राई कर रहे हैं, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट, वेदर इट्स अ सर्विस, वेदर दे आर सेलिंग समथिंग एज एन एड्यूटेक प्लेटफॉर्म, वेदर दे हैव समथिंग इन अ फिनटेक प्लेटफॉर्म, राइट? उन्हें क्या बेचना है वो उन्हें समझना है. देन दे हैव टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर का साइकोलॉजी क्या है. मेरा जो कस्टमर है उसका वो सर्विस, उसका वो नीड है, उसका वो वांट है, एग्जैक्टली किस स्टेज पे आ रहा है. सी, अगर आपका सर्विस एक नीड है, आपका प्रोडक्ट एक नीड है, तो कस्टमर तुरंत खरीद लेगा. बट वो वांट है तो वो डिफिकल्ट है बेचना, और अगर वो डिजायर है तो और भी डिफिकल्ट है. बिकॉज डिजायर तो तब होता है जब कस्टमर के पास सब कुछ हो, इंटैक्ट हो, he has fulfilled all his needs, he has fulfilled all his wants, then he goes on to purchase the desired product, right? तो सबसे पहले ये समझना है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, राइट? एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सप्लोरिंग मेटा एज अ प्लेटफॉर्म, तो अगेन एज आई सेड, Meta as a platform comes at a later stage. First thing that you should be focusing on to is कि आप स्क्रोल कैसे रुका सकते हो आपके कस्टमर का, आप कितने अच्छी तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? मेटा तो बहुत बाद में आता है. मेटा इज ओनली अ प्लेटफॉर्म मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन,
एंड टारगेटिंग द राइट ऑडियंस. अगर आप प्रोडक्ट को और सर्विस को समझा ही नहीं पा रहे हो, तो मेटा नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको हेल्प नहीं कर सकता है. Okay. या So that's great. My other question is, what is the most prominent misconception? मतलब लोगों का क्या मिसकॉन्सेप्शन है मेटा एज अ प्लेटफॉर्म के लिए? राइट. सो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन अगेन, गौरव, ग्रेट क्वेश्चन अगेन, बिकॉज काफी लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर मैंने 10 रुपए भी डाल दिए प्लेटफॉर्म पे तो 20 रुपए कैसे आएंगे, और से फॉर एन एग्जाम्पल आई एम पुटिंग अ लाख ऑन अ प्लेटफॉर्म, देन हाउ टू मेक इट 2 लाख और 5 लाख, राइट. सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि 1 लाख डाला तो मुझे 5 लाख कैसे मिलेगा. द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर ईयर इज कि अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, राइट, और अगर मैंने एक स्पेसिफिक क्रिएटिव या स्पेसिफिक वीडियो पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कितने परसेंटेज ऑफ यूजर्स ने वो वीडियो मेरा 30% तक देखा, वो वीडियो 50% ऑफ वीडियो देखा, कितने लोगों ने 90% ऑफ वीडियो देखा. जब तक आप ऑडियंस को एंगेज ही नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप आरओआई तक पहुंचोगे ही नहीं, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है कि आप डे वन पे अगर आप 10 रुपए भी डालते हो, और डे वन पे इवन इफ यू इन्वेस्ट ₹1,00,000, यू एक्सपेक्ट दैट कि आज मैंने 1 लाख रुपए प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया है तो मुझे आज शाम तक 2 लाख मिलने चाहिए, विच इज नॉट द केस. Everything builds from a funnel. There is a customer stage, as I said earlier in the presentation. You have to take the customer from a stage of being unaware to the stage of being most aware, right? उसी के बाद you will see any results on the platform. So thank you very much, Rahul, and we have learned so much about Meta today. Yeah. Thank you very much, and thanks for your sharing your expertise. Great, great. Thank you, Gaurav. Thank you for inviting me. Thank you to JIC team as well for inviting me as a guest, and all the audience who were there on this and got a few things to learn from it, right? I'm always available to contact at my contact number, which is mentioned on the deck. And then I've also mentioned my email ID, since I'm also a person who consults a lot of brand independently and strategize strategies for a lot of brands independently, right? So you can reach me out anytime. If the presentation is required to be shared, I can definitely share it with the JIC team and then can be shared along with all the delegates who have attended the session. Thank you for your time, Gaurav. Thank you very much, Rahul. Thank you. Thanks.